कराची किंग्स ने अपनी टीम और अपना सब कुछ स्ट्रक्चर बदल दिया, क्या उनकी किस्मत बदलेगी कि नहीं? वेलकम टू शाइनी साइड, आई एम योर होस्ट फरीस, और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर फ्रॉम ह्यूस्टन एंड इमरान असलम इस वक्त बहरीन से लाइव है हमारे साथ। उमर, कराची किंग्स ने पिछले पहले 4 सीजन में एक भी फाइनल नहीं खेला। वो PSL 5 जीते विद इमाद वसीम एज कैप्टन, और फिर वो उसके अगले सीजन में वापस 2021 में वो फोर्थ आए, और पिछले 2 सीजन से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो क्लियरली इन द मीन टाइम उन्होंने मात को कैप्टन सी से हटा के बाबर को कैप्टन बनाया, वो वापस से मात को लेके आए। इस दफा they've gone in with lots of changes. So how do you see Karachi in the last few years, and does the it almost seems to be a surprise कि वो बीच में एक टाइटल जीत भी गए? हाँ, it's interesting, right? क्योंकि there was a decent team, decent squad, और इमाद वही बीच में एक विन आई तो वो आपको लग रहा था कि that was a turning point, लेकिन it hasn't worked. So it makes sense कि they've made a total revamp. I think Shan Masood is a interesting captain, although उन्होंने उनकी भी कोई captaincy record PSL में इतना अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन obviously we know him to be a good cricketing mind, so it'll be interesting to see. And yeah, they've got a fairly decent squad which we'll talk about. Yeah. लेकिन yeah, आपने ऐसे स्टार्ट कहा कि उन्होंने हर चीज बदल दी है, होपफुली उनका लक भी बदल जाए. So Imran, they've got, so I think at the starting at the top they pulled in Haider Azhar as GM. Haider जो थे वो मुल्तान में होते थे, and he's quite an astute analyst with seen on TV etc. I think उसके साथ I think they're trying to create a cultural change as well, right? So they moved on from guys like Amir and Imad Wasim जो काफी अरसे से इनकी टीम का हिस्सा थे. अब अगर आप इनकी, they've got Phil Simmons as coach, right? Now he again is quite successful with the coach as the West Indies. तो ये इनकी इस वक्त लीडरशिप स्ट्रक्चर है इमरान. So how do you see Karachi, and do you think कुछ बदलेगा या वही चलता रहेगा? I think think tank or leadership structure तो definitely strong है. Phil Simmons obviously has proven as a coach, so overall strong है. Players का इनका लाइनअप, अगर आप जो इनका स्क्वाड है उसको देख के कुछ इस स्टेज पे एटलीस्ट मैं कन्विंस नहीं हूं कि इनकी किस्मत ज्यादा बदलेगी. मुझे भी Because कुछ I think हाँ, इनिशियल मुझे भी थॉट यही है, बट गो ऑन, सॉरी. मुझे स्क्वाड की कॉम्पोजिशन देख के कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज स्क्वाड लग रहा है. मतलब आपके पास शान मसूद है, साथ शोएब मलिक, मतलब ठीक है, मैं मतलब मलिक इज वेरी फिट एंड ऑल, बट रिटायर हो गया हुआ है काफी अरसे से. देन यू हैव पीपल लाइक हसन अली, अनवर अली एक्सेट्रा, जो यू नो डिस्कार्ड्स ऑफ पास्ट सीजंस. तो कुछ एक कंफ्यूज और लग रहा है कि कुछ इधर उधर से उन्होंने डिस्कार्डेड प्लेयर्स इकट्ठे करके स्क्वाड अगर मैं किया है. उमर में अगर आई डोंट इनके सी द लक चेंजिंग. Umar, if I look at their star players from last time around, right? I mean, star in the sense relative बात कर रहे हैं हम लोग. Imad Wasim was the 5th highest run getter in the tournament last time. He scored 404 runs and 170 strike rate. He's no longer part of the side. They moved on from him. I don't believe the reasons were cricketing. They're probably cultural reasons की वजह से move on हुए Imad Wasim से. उनके highest wicket takers थे Amir and Imad with 9 wickets each. Both of them are not there. And again, it wasn't a stellar performance, लेकिन relatively उनकी बैटिंग में जो हाईएस्ट एवरेज किसी की भी थी वो मैथ्यू वेट की थी, जो और शोएब मलिक दोनों की 28 एवरेज थी. नॉट वेरी हाई, बट अगेन वेट इज नॉट देयर. मलिक ने ये भी रन बनाए थे 130 के स्ट्राइक रेट पे. सो अगेन नथिंग एक्सेप्शनल. सो इट्स नॉट लाइक दे हैड मच टू होल्ड ऑन टू उन्होंने, लेकिन जो एक आध चीज थी वक्त है वो भी उनके पास नहीं रही है इस वक्त. हाँ, लेकिन वही जैसे आपने कहा कि वो कोई इतने जबरदस्त नंबर्स नहीं थे कि, तो इट्स नॉट लाइक इट्स अ बिग लॉस. तो आई डोंट थिंक दे ऑब्वियसली इमाद वसीम आई थिंक इज अ T20 स्टार, तो वो शायद ज्यादा मिस करेंगे ऑलराउंड कैपेबिलिटी, लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दे विल मिस इन जनरल. अब वही जैसे बात हो रही है कि इस नए स्क्वाड में भी लेकिन कौन सुपरस्टार्स हैं, पोलार्ड नजर आ रहे हैं, इसके अलावा चलें, अगर आप नए इसकी बात कर रहे हैं तो जरा स्क्वाड भी स्क्रीन पे ले आते हैं. तो शान मसूद कैप्टन है, शोएब मलिक उनके साथ हैं, जेम्स विंस इज अ डिसेंट ओपनर आई वुड से. टिम साइफर्ड अगेन वो न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड में होते हैं आजकल, 11 में भी हैं. रिसेंटली स्कोर्ड अ कपल ऑफ गुड नॉक्स अगेंस्ट अस. साद बेग इज एक्चुअली द विकेट कीपर एंड आई आल्सो बिलीव द कैप्टन फ्रॉम द अंडर-19 वर्ल्ड कप जो हमने अभी अभी विकेट खेला है हमने. But then again, मोहम्मद नवाज and all round and Kevin Pollard का होना I think is a good option because वो आपको बॉल बैलेंस इन दोनों जो हैं are very useful. And then bowling में हसन अली, who हम उनका नाम सुन के अक्सर हंसते हैं, but उनका लास्ट ईयर PSL काफी अच्छा था. Daniel Sams is a left arm English bowler. Anwar Ali, like you said, is a has been. तबरेज शमसी इनके स्क्वाड में मौजूद हैं, लेकिन उनको अब साउथ अफ्रीका ने बुला लिया है तो वो 6 मार्च के बाद नहीं खेलेंगे, तो उससे पहले आधी PSL खेलेंगे वो. Arafat Minas was the best spinner Pakistan had in the under-19 World Cup. So he's been picked up after the under-19 World Cup by Karachi Kings. So I'm actually very
Keen to see him, especially because हमको पता है हमारे क्या मसले हैं स्पिन के. और मीर हमजा again we all know. So Imran, how do you see the squad? जैसे मैं कह रहा था कि कुछ स्क्वाड की कॉम्पोजिशन देख के इट डजंट कम अक्रॉस एज अ वेरी कन्विंसिंग स्क्वाड, जिस तरह कुछ बाकी स्क्वाड्स को देख के लगता है. लेकिन बैटिंग में इनके पास डेप्थ और ऑप्शंस तो हैं, बट शान मसूद, ठीक है फाइन, ही हैज बीन अराउंड पीएसएल एक्सेट्रा, लेकिन इज ही रियली द कट फॉर द टी20 गेम? 140 150 स्ट्राइक रेट वाली गेम उनकी नहीं है. शोएब मलिक एज वेल, हमने लास्ट टूर पीएसएल में भी देखा था, वही 130 स्ट्राइक रेट था. वेन्स, टिम साइफर्ट हैं जो कि ऑब्वियसली हैव अ बिट ऑफ फायर पावर देयर, लेकिन इनकी बैटिंग देख के मुझे ये नहीं लगता कि ये उस तरह की बैटिंग है जो कंसिस्टेंटली 170 180 प्लस स्कोर्स पुट अप कर सकती है, अनलेस कैरन पॉलार्ड कम्स इन एंड प्लेज वन ऑफ हिज नॉक्स, ठीक है, Yeah. लेकिन तो वो नहीं है. तो फिर आप यही कहेंगे कि ठीक है, अगर आप ये बैटिंग उस तरह की स्ट्रांग नहीं है तो क्या ये बॉलिंग से 140 150 160 डिफेंड कर सकते हैं? अगेन, बॉलिंग लाइनअप देखते हुए कोई मेजर कॉन्फिडेंस नहीं मुझे मिल रहा है इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए भी. उमर, मुझे इस टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा सॉलिड है, बट मुझे ना जो उस कैटेगरी प्लेयर्स जो होते हैं, एलेक्स हेल्स, राइली रूसो, फखर जमान, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस कैटेगरी का मुझे ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट प्लेयर नजर नहीं आ रहा इसमें. एंड इवन द सपोर्ट कास्ट इज स्ट्रगल. हाउ डू यू सी दिस उमर? हाँ, जेम्स विंस को आप आर्ग्यूबली शायद कह सकते हैं कि वो हैं, लेकिन हाँ, यूर राइट, कोई ऐसा कंसिस्टेंट सुपरस्टार स्टैंड आउट नहीं नजर आ रहा. एंड दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज. जैसे इमरान ने कहा कि क्या ये लोग 180 प्लस स्कोर्स कर सकते हैं अगर केरन पॉलार्ड की कोई फ्रीक इनिंग्स ना हो. नवाज इज गुड इन द मिडिल ऑर्डर में थोड़ा नजर आ रहा है इनका कैपेबिलिटी बिटवीन बोथ ऑफ दोस ऑलराउंडर्स, लेकिन हाँ, मतलब नहीं, यूर राइट, यहाँ पे आई मीन trying to compose the 11 abhi it's a challenge, right? कि क्या Vince और Seifert open करेंगे and that's your explosive top order. Yeah. So speaking of 11, Umar, since you spoke about it, so I think the 11 I feel like you'll have in mind again. You're right. Vincent Seifert, Shan at 3, Malik at 4, Pollard at 5. Again, he bats fairly highly for Mumbai Indians also. So Pollard at 5. इरफान खान भी एक बैट्समैन है, थोड़ी सी बॉलिंग भी करते हैं, सीम बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं. वो 6 पे हैं, नवाज 7 पे हैं. अगेन इज इंटेजेबल. एंड देन हसन अली, डैनियल सैम्स, लेफ्ट आर्म क्विक, ऑल्सो अ बिट ऑफ अ बैटर. सो फिर मीर हमजा हैं, एटसेट्रा. सो उमर, हाउ डू यू सी द 11? um I think the top half makes complete sense. Bottom half में थोड़े से interesting to see. तो इसमें spinner Arafat is our spinner, right? Arafat is a spinner, G. And then Mohammad Nawaz is also the spinner, of course. हाँ, okay, that's not too bad. And then Hmm. Daniel Sams का honestly मैं तो record नहीं देखा, He's लेकिन been new around ball. the IPL, PSL, etc. पर ज्यादा खेले कम है, उनको स्क्वाड्स में होते हैं, और लेफ्ट आर्म क्विक हैं वो, बिग मतलब बैच भी खेलते हैं. इनकी न्यू बॉल पहले 5 ओवर में बड़ा मुझे मसला लग रहा है कि हसन अली हमने देखा है कि यस ही इज डिसेंट, लेकिन ही इज नॉट द वन टू कीप गुड कंट्रोल इन द फर्स्ट Yeah. 5. मीर And हमजा Mir Hamza also and I'm not sure what in the T20 format, to be honest. एग्जैक्टली, तो वो एक मुझे बहुत मेजर चैलेंज लग रहा है कि इनको नवाज के साथ शायद ओपन करनी पड़ी बॉलिंग टू मेक अप फॉर नवाज तो दैट. काफी ओपन कर चुके हैं वैसे पीएसएल में, सरफराज कराते थे उनको कोटा के लिए. यही होगा. एंड देन बिग क्वेश्चन वही होगा कि हाउ दीज द पेसर्स हियर डू. आई थिंक इनकी फेट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ दीज थ्री पेसर्स आर एबल Yeah. टू डू मेरे. Imran, your take on the 11? आई थिंक एक तो एटलीस्ट जब तक वो अवेलेबल है तो तब्रेज शमसी इज समवन हु आई वुड लुक टू प्ले इन द 11. Yeah. काफी स्ट्रॉन्ग स्पिन बॉलिंग क्रेडेंशियल्स हैं. मे बी डैनियल सैम्स की जगह रिप्लेसमेंट बनती है, बिकॉज आपको एक अगर इंटरनेशनल प्लेयर से रिप्लेस करना है. सो आई वुड एटलीस्ट, आई थिंक इनिशियली बी कीन टू प्ले तब्रेज शमसी फॉर फ्यू गेम्स जब तक वो अवेलेबल है. उसके बाद अरफात मिन्हास कैन कम इन. बाकी आई थिंक देयर इजंट टू मच टॉप 5-6 में, जिस तरह उमर ने कहा है. इट्स प्रीटी कंसिस्टेंट, प्रीटी ऑब्वियस. आई थिंक यही बनती है. Hmm. मे बी देयर इज अ केस फॉर नवाज बैटिंग अप द ऑर्डर, बट अगेन थोड़ा सा वो फ्लोटिंग हो सकता है. अगेन डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स. नवाज लेफ्ट हैंडर है, बिकॉज बाकी आप देख रहे हो शान मसूद के बाद शोएब मलिक, पॉलर्ड. आई एम नॉट श्योर इज इरफान खान अ लेफ्टी और राइट I'm हैंडर. not sure. I don't believe he is. अगर अस्यूमिंग इरफान राइट हैंडर है तो आई थिंक केस बनता है कि नवाज कैन कम इन, अगेन जी. डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स. एंड स्पिन अगर मिडिल में है तो नवाज कैन कम इन अप द ऑर्डर. बट ओवरऑल आई थिंक more or less similar 11 I would think, but the Tobresh Shamsi is I think one omission here जो कि I would be keen to play. Hmm. Okay, interesting. And Imran, since we are with you, what's your, अब स्क्वाड भी देख लिया हमने. आपने एक इनिशियल तो आपने एक ट्रेलर दे दिया था अपनी प्रेडिक्शन का, लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं इसको? टॉप 4 में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? I think कि फाइनल मैं तो मैं पूछ ही नहीं स्टिक रहा आपसे. करूंगा.
नहीं लेकिन आई थिंक लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये एक मैच जीते थे कराची लास्ट सीजन में पीएसएल के, I mean, ये और बाकी सारे पिछले दो हारे दफा थे। क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं. I mean, unfortunately पिछले दो सीजन से हो क्या रहा है कि pretty soon into the tournament, Quetta and Karachi have kind of dropped out of the race. So league के लिए Yeah. obviously it's not so good. But Quetta बिल्कुल, looks stronger this time. उसकी हम बाद में बात करेंगे क्वालिफाई दूर की शायद. बात है, जो जहाँ तक मुझे याद है लास्ट सीजन में ये एक मैच जीते थे सिर्फ, तो शायद उससे हो बेहतर सकता परफॉर्म करेंगे, लेकिन आई डोंट सी देम क्वालिफाइंग। है. Okay. Umar? I agree. Same. बहुत challenging लग रहा है. I mean, interesting. If they show up in the top four, I think it'll be down to Shan Masood's creative captaincy. लेकिन उसके अलावा मुझे मुश्किल लग रहा है. Right now they look like a weak squad. हमने जब उस दिन बात की थी, I think इस्लामाबाद की, right, who had a weak squad as well. लेकिन उनकी starting 11 was pretty good actually. Yeah. लेकिन इनकी starting 11 में भी हमें काफी holes नजर आ रहे हैं. तो I think मुश्किल लग रहा है इनका qualify करना. They look to me as a bottom two team. You know, इस शो को जरा मैं जान डालने के लिए आई वुड लव टू आर्ग्यू कि जी ये मेरा ख्याल क्वालिफाई करेंगे, बट इनको स्कोर देख के इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू मेक दैट आर्ग्यूमेंट, सो आई एम गोना लेट इट गो. बट थैंक यू फॉर बीइंग ऑन, उमर. Thank you, Faris, and Thank you, Imran. Karachi थैंक यू Kings. फरीस। Hopefully, we'll have you guys again soon as the PSL kicks in. But for those of you watching, please like the video, subscribe to the channel. And if you have a view on what you think Karachi's 11 should be, वो किस तरह perform करेंगे, please leave a comment. And in the meantime, stay tuned to the shiny side.